The grey wolf is an extremely adaptable species and is one of those animal species that survived the last ice age. The grey wolf's physical characteristics enable it to adapt quickly to the harsh condition of the ice age, and its culling adaptation help it to survive in the changing environment. Yellowstone was initially made famous due to its unique geology caused by its location on the North America plate, which for millions of years has slowly moved across a mantle hotspot via plate tectonics. The Yellowstone caldera is a volcanic system, the largest in North America, which has formed as a result of its hotspot and subsequent large volcanic eruptions. Because Mandarin is the most commonly spoken dialect, many people use the word Chinese to refer to it. While roughly 70% of the country speaks Mandarin, many other dialects are spoken as well. The languages are mutually intelligible to a varying degree depending on how close the languages are to one another. People who want to become astronauts must be in the top physical condition. Each country's space program has health requirements for its space themselves. They usually access a candidate fitness to withstand some pretty tough conditions. For example, a good candidate must have the ability to endure the rigors of liftoff and the function in weightlessness. As far as we know, nothing can move faster than light. According to Einstein's theories on relativity, it takes an infinite amount of energy to accelerate an object with mass up to the speed of light. As a result, it would appear that having a spacecraft traveling at or exceeding the speed of light is simply impossible.
Concentration is the expression of how much solute is dissolved in the solvent in a chemical solution. There are multiple units of concentration. Which unit you use depend on how much you intend to use the chemical solution. The most common unit are mass percent, volume percent, and the mole fraction. An archaic name is an older name for a chemical that predates the modern naming conventions. It's helpful to know archaic names of chemicals because older texts may refer to chemicals by these names. Some chemicals are sold under archaic names or may be found in storage labeled with the older names.
जस्ट स्क्रॉल इट डाउन सो दैट वी कैन चेक इट कि हमारा कितना स्कोर है इसके अंदर. सो वी हैव गोट 80 इन स्पीकिंग. लाइक इफ वी चेक की रीड अलाउड्स के अंदर वी हैव डन डिफरेंट, लाइक डिफरेंट स्टूडेंट्स ने किया था, जिसमें वेरी फर्स्ट वन वाज 71, जिसके अंदर अगर हम फ्लुएंसी को चेक करें The दैट grey wolf is not bad. It was 71, pronunciation was 68. But guys, you have to check कि basically हमें score जो आ रहा है that is just because of our read alouds. ऐसा नहीं है कि हमारे reading के answers गलत हैं, but mostly marks like are contributed from your uh, read alouds. You can check. The second one was approximately 70. The fluency was Yellowstone लगभग was initially made 74. So आपकी fluency लगभग 65 plus रहनी चाहिए if you really want to score because good. Mandarin That was best one. Pronunciation like sometimes doesn't matter. These kind of pauses should be avoided, but that's okay. आपको continuous flow रखना है. Like People this who was want to also good, but pronunciation needs to be improved in this kind of sentence. And these pauses like red words हो सकते हैं, but pauses आपके कम होने चाहिए. So that would only help if you put the stress over them. आपको stress देना बहुत ज़रूरी है. As far as we, so that was our best student who has performed. And he took a pose over here. Like फिर भी आपको like देखना कि 87 in the fluency and speed is लगभग 120. थोड़ा सा और स्लो करते तो शायद ये और ऊपर जा सकता था, बट दैट्स ओके. तो यू कैन चेक कि हमारे रीड अलाउड्स के अंदर स्कोर जो आए हैं दैट वाज हेल्पिंग अस टू गेट द स्कोर्स इनटू आवर रीडिंग सेक्शन एज वेल. एंड उसके बाद द लास्ट वन इट्स 69. an नॉट archaic बैड एज वेल. फ्लुएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, always remember. So let's go on to our next section, that is writing. As you know that guys ki reading is only module in which we get marks from all the sections like speaking, writing, reading itself and the listening as well. Speaking से हमें read alouds, writing से हमें मिलते हैं like written text से. So that was good as well. You can just put down the lines that आपने check की होंगी कि lines कैसे उठाई हैं. That was done by our students. And let's go on to the reading section. So let's check what we have done. So it's good, futuristic, reassembled, adopted. What we have done is कि हमने यहाँ पर जिसको GST जो मैं बोलता हूँ grammar sense तुक्का, I'm not going only with तुक्का. First of all I'll be checking like by से पहले third form आती है, तो then उसके बाद sense देखना है कि क्या किया गया, adopt किया गया है या reassemble, I mean exempt किया गया, erupted. कई बार ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको लाइक पहले से सुने हुए लगते हैं. ऑलवेज ट्राई टू यूज देम. जो आपको फर्स्ट लग रहा है गॉड्स वॉइस जिसको बोलते हैं, देन दिस वन वाज एक गलत हुआ इसमें. लेट मी चेक विच वन. फोस्टर अकाउंटेबल ओवरसीज. ओके, सो आवर स्टूडेंट वाज सेइंग कि हाँ यहाँ ओवरसीज आएगा, बट स्टिल we didn't put that. That's okay. Again, like we have got in the next one, it's 4 out of 4. 1 out of 4 as well. Like देख सकते हो आपकी राइटिंग आई मीन रीडिंग के अंदर 85 आया है, 80 के लगभग स्कोर आया. I mean तो गलत भी होते हैं आंसर्स. हमेशा ठीक होना इट्स नॉट नेसेसरी, गलत भी हो सकते हैं, बट आपको हर टास्क में अपना बेस्ट परफॉर्म करना है. And again like let me go on to the fill in the blank for reading writing. इसमें भी हमारा एक गलत था. That was I guess depict colliding, debunking. So it should be debunking. We'll explain in the next video कि आपको कैसे use करना है. And guys again like that's a tip, like you should also watch these movies if you really want to improve your English and brain skills. Limitless and Lucy, these are the good movies. So B, C we have selected 2 answers, so we were correct. Like let me tell you, if you are getting multiple choice more than one, in that case like you can go for only one answer if you're sure enough. अगर आपको लगता है कि सेकंड भी आ सकता है, then only सेकंड लगाएं, अदरवाइज वो 0 हो सकता है. Just like that. मतलब यहाँ पर हमने एक ही लगाया, that was okay.
बट लेट मी टेल यू दैट कि यहाँ पर आपको श्योरिटी होगी तब लगाना, बट यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको स्कोर नहीं मिलता, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको मत कीजिए, क्लास में प्रैक्टिस कीजिए, बट एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है इस चीज़ के लिए। देन द रीऑर्डर पैराग्राफ, इट वॉज करेक्ट। So what we used is like Plato, because that's started with an independent sentence. फिर उसके बाद फर्स्ट आंसर रीज़न दिया है उसके लिए कि क्यों किया गया था, देन अनटिल रफली अब तक की बात की है, और टुडे वाला सेंटेंस मोस्टली लास्ट में आता है। ये इसके लिए ट्रिक्स है, दैट आई विल प्रिपेयर अनदर वीडियो फॉर दैट। सो दिस वन वॉज ऑल्सो गुड। रीऑर्डर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, लाइक अगर आप चेक करें यहाँ पर वेटेज 3 and 4, 7 मार्क्स आर गिवन फॉर योर रीऑर्डर पैराग्राफ्स। एग्जाम में ये 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 6 to 7 तो रहते ही हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर गोइंग टू do your reorder paragraphs perfectly with your grammar tricks, and after that like fill in the blanks. They were, I guess, correct according to the grammar that we have used. So let's check on to the next one. These were also correct again and again and again. सो लाइक देख सकते हैं कि आपको अगर स्पीकिंग के आई मीन रीडिंग के अंदर जो स्कोर चाहिए, स्पीकिंग ऑलवेज मैटर, बट आपका जो रीडिंग का स्कोर है दैट विल बी इम्प्रूव्ड बाय योर रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स एंड रीडिंग ब्लैंक्स एज वेल। उनको ग्रामर के रूल्स से अपनी सेंस के हिसाब से आपको करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आई कैन चेक लाइक आर सिंगल आंसर्स, दे वर ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि आंसर्स वहीं पर दिए हुए आपको ढूंढना है बस। लाइक अगर गलत भी होता है दैट्स ओके, because we should aim for 90, whether or not we get 90 or like doesn't matter, but आपको फिर भी 90 के लिए प्रैक्टिस करना है। एंड लिसनिंग के लिए भी आपका लाइक रीडिंग में स्कोर जो जाता है दैट इज फ्रॉम हाईलाइट करेक्ट समरी। सो वी वर इनकरेक्ट एट दैट टाइम। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स वी वर गुड इन दिस, लाइक यहाँ से आपको 6 to 7 मार्क्स अभी जो लिसनिंग में मिल रहे हैं, सेम आपको रीडिंग के अंदर भी लगभग उतने ही मार्क्स जाते हैं। देन दीज वर ऑल्सो करेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी कैन चेक, यहाँ पर एक गलत हुआ है हमारा, दैट्स ओके, बट मेक श्योर कि आप नेगेटिव मार्किंग ना करें। अगर आपको 4 आंसर्स मिले तो 4 ही लगाइए, अगर आप 5 लगाते हैं और आंसर्स उसके 4 थे तो आपके 3 नंबर रह जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट लाइक टुडेज रीडिंग tips, or you can say the live mock test. If you really want to learn it, then you can call on the given number. I'll be helping you out for that. Thank you so much guys, have a good day.